Hello friends, welcome to sid'schemistry. We love to educate. In the last session we learned about the rate equation and the order of reaction. How to find the order of reaction from the given representation of rate equation that we have understood in the last lecture. Now in today's session we are going to learn about the how to find out the units of the rate constant, and then after we are going to learn about the molecularity. We are also going to compare the important term molecularity and the order of reaction. So let us start today's session. Thank you. Hello friends, welcome to sid'schemistry. Now over the screen, as you can see that the checklist is represented, and in the checklist we will understand what has been done and we are going to do today. So you can see that in the last session we understood about the rate constant, and then we understood about the order of reaction definition. We understood about the calculation of order of reaction from the rate expression. So that already done. Now in today's session we are going to learn about the units of the rate constant, and then after we are going to learn about the molecularity. Molecularity, in which we are going to learn about the definition, then several examples, then what is rate determining step, and then we are going to learn about the difference between the molecularity and the order of reaction. So these 5 points we are going to learn in today's session. So let us start today's session with the understanding about the how to calculate the units of the rate constant. So we'll go to the document. Now before we go further in the chapter, let us understand two small and important definitions which will help us to understand molecularity. Before we actually calculate the units of the rate constant, we need to understand these small two definitions, and that we will clear here. So you can see, as you can see, that the first definition you can write in your session notebook. The first definition is elementary reaction, and the second definition we are going to understand, that is complex reaction. So reaction as such are divided in two types. So if we divide reaction, they are called as two types. The one reaction is called as elementary reaction. Elementary reactions. And the other reactions are called as complex reactions. Complex reactions. Now, what is the difference between these two? To understand the difference, let us prepare some sort of representation. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए से कंपाउंड ई बन रहा है. सो ए इज द रिएक्टेंट एंड ई इज द फाइनल प्रोडक्ट. बट टू अचीव द फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स से पास होना पड़ता है. सो वो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी लाइक, अगर अल्फ़ाबेट से हम सोचे तो ए टू बी, देन बी से सी बना होगा, देन सी से डी बना होगा, एंड देन डी से ई बना होगा. सो अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, इस पूरे सेट को ऑब्जर्व करें, तो वी हैव ए टोटल 1 step, 2 steps, 3 steps and 4 steps. There are 4 different steps in this reaction, and the 4 different steps when combined together to achieve the E,
एंड अगर हमें ये स्टेप्स नहीं गिवन है, हमें सीधा A to E गिवन है, माने कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने गिवन है दैट इज A to E, बट इन रियलिटी दे आर नॉट डायरेक्ट स्टेप, दैट इज नॉट डायरेक्ट स्टेप, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे A to B है, B to C है, C to D है। सो ये जो सारे स्टेप्स गिवन है वो अगर प्रेजेंट है देन वी कैन से दैट these are the reactions combination and the whole set of reaction means A to B, B to C, C to D and D to E is called as complex reaction. तो अगर हम इन सबको एक साथ में लिखें तो that can be called as complex reaction. That can be called as complex reaction. बट अगर मैं कोई इंडिविजुअल स्टेप्स, अगर मुझे सिर्फ इतना स्टेप्स गिवन है A to B, then it is called as elementary reaction. Then it is called as elementary reaction. It means that in these complex reactions there are four elementary reactions. So elementary reactions are the reactions which convert one compound to second compound in a single step. They are single step reaction. In a very short we can say that they are single step reaction. And complex reactions are the reactions which involve multiple steps. उसके बाद बहुत सारे steps होते हैं. So ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे लिटरेचर में जब भी रिएक्शन गिवन हो तो वो एक्सप्लेन करके दिया हो कि एलिमेंट्री है या तो कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज बाय लुकिंग एट द रिएक्शन, बाय जस्ट लुकिंग एट द रिएक्शन वी कैन नॉट इजीली से दैट इज इट ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इज इट ए एलिमेंट्री रिएक्शन. अगर हमें पूरे स्टेप्स की जानकारी है तभी हम बता सकते हैं कि एलिमेंट्री है या तो कॉम्प्लेक्स है. सो यू कैन सी इन द textbook and you can write the definition that the definition is that the reactions taking place in one step are called elementary reactions, and when the elementary reactions, sequence of elementary reactions are present and give us the product, the reaction is called as complex reaction. So when multiple elementary reactions are present to give the product, they are called as complex reactions. So please write down these two definitions before we go further. I hope you understand both the concepts. Now going to the next page. Now dear friends, give title that finding units of the rate constant. Give title that finding units of the rate constant. And you must give title units of rate constant. Units of rate constant. And to find out units of rate constant we have taken a general example, that is a reaction called AA BB. It gives CC and DD. In this reaction you can see that small a, b, c, d are the mole numbers and capital AB are the reactant and capital CD are the products. Now dear friends, अगर इसका rate represent किया जाए तो we can represent rate of reaction like K into A raised to X and B raised to Y. This is called as rate equation, rate expression, rate law. एंड इसको इस रिएक्शन के लिए हमने जब रिप्रेजेंट किया तो हमें x एंड y पता नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन से विदाउट एन एक्सपेरिमेंट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द x एंड y. सो दिस इज द rate equation, and rate equation was like, the definition of rate equation was like representation of rate with respect to the concentration of the reactants is called as rate equation. So rate equation हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. नाउ अगर हमें k के यूनिट बनाने हैं तो हमें k का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. सो विल प्रिपेयर k, वी विल टेक k इनटू द सब्जेक्ट. सो इट विल बी लाइक दिस, रेट अपॉन a raised to x and b raised to y. Rate is equal to a raised to x and b raised to y. And by using this formula we can calculate the units of the k. So how to do that? For that we are going to the
Next page, let us take a blank page. We will prepare some sort of table so you can understand easily. We prepare simple table, and first of all we will talk about for the zero order reaction. For the zero order reaction, we can write that. First of all, let us write the formula just we prepared for the K. K is equal to rate. K is equal to rate. Right, upon a raised to x and b raised to y. So rate का unit as such क्या होता है? Rate is a mole per liter. Means rate is a mole per liter concentration and concentration per time. So we know that अगर हम recall करें तो rate के लिए we have already written that delta R by delta T when we started with. डेल्टा आर को अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करें तो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन. आई रिपीट, डेल्टा आर के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर सकते हैं एंड डेल्टा टी के लिए हम टाइम यूज़ कर सकते हैं. तो सिमिलरली रेट का जो फुल यूनिट है एज सच वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम. सो आई विल राइट यूनिट फॉर द रेट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम. सो वी कैन राइट दैट concentration per time. Now we know that what are the units of A? A is a concentration. Whenever something given in the square bracket, we consider it is a concentration. So for A, we can write that concentration. So I am writing in short concentration raised to x, and again I will write concentration raised to y. नाउ हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनी हुई है, अगर हम इसको ज़ीरो ऑर्डर के लिए कन्वर्ट करें तो वी मस्ट टेक x वैल्यू एंड y वैल्यू 0 0 because zero order reaction means x plus y is equal to 0. So whatever the values of x and y, when we add them, that must be 0. So ऐसा करने के लिए डेफिनेटली हमें x और y को 0 0 कंसिडर करना पड़ेगा. So if we consider x and y 0 0, the unit will be like this. Concentration per time upon concentration raised to 0, and again I have to take concentration raised to 0. So it will automatically finally end up with this will become 1, this value will become 1, and this value will become 1, because something raised to 0 is equal to 1, and therefore finally we end up with the concentration upon time. So if we write this unit in terms of fully displayed mode, so concentration को हम बोलते हैं mole per liter. So we can write unit mole per liter, and time itself is given. So time is represented mostly in seconds, but if it is given, if it is asked for the hours and minutes and days, you can convert it to any time. So anywhere in the MCQs, in the numericals, if they ask different way, you can convert it. So you can write 1 upon seconds. Time is called as, so it is already in the denominator side, so we will write 1 upon second. So final unit we end up with the, अगर इसको एक ही सेंटेंस में लिखे तो we can write that mole per liter per second.
this will be the unit of the zero order reaction, unit for the K, rate constant unit for the zero order reaction. So such way we can find the unit of the K. Now let us understand what will be the unit of the K for the first order reaction. So for the first order reaction, let us find the unit. For the first order reaction, we can write like this. We have to take values of x and y. One value of x means value of x we will take 1 and value of y will make a 0. So when we add, the reaction will become 1 plus 0, so 1. So first order reaction will be created. So understand that K will be in this case like this. Concentration per time is already unit of the rate. Then we will divide with the, we will take for example x value is 1 and concentration raised to 0. So this is x and this is y. So when we take 1 plus 0, it will become 1. So first order reaction will be created. Now if we simplify, it will become like this. This concentration and this concentration will be cancelled and concentration raised to 0 will become 1. So ultimately we will end up with 1 upon time. And 1 upon time, if we write in the form of unit, it will be 1 upon second. So finally unit of K for the reaction will be second inverse. Second inverse. Now let us find the unit for the second order reaction. So it will be like this. K is equal to, let me take this with somewhat little bit upside. K is equal to concentration per time. This is already a unit for the rate. Then it may be divided with the concentration raised to 1. अगर मुझे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बनाना है तो मुझे x और y की वैल्यू को 1 1 कंसिडर करना पड़ेगा, या मुझे x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को 0, या तो मुझे x की वैल्यू को 0 एंड y की वैल्यू को 2 कंसिडर करना पड़ेगा. Even I consider in fractions, but let us make it is more simpler that I will take x value 1 and I will take y value 1. So this way I can easily make it done. So concentration raised to 1 and concentration raised to 1. So if we simplify this, it will form concentration will be cancelled, and finally we end up with 1 upon concentration and into time. So if we simplify, this fact, then it will become like 1 upon mole per liter into second. If we little bit more simplify the fact, it will become liter upon mole into 1 upon second. So finally the unit will be for the reaction is liter mole inverse second inverse. So this is how you can simply make it done. Then you can easily find out the values of the units. So ऐसे आप units को k की value k units को निकाल सकते हैं. And similarly you can go further, but in your syllabus it is given for the zero order, first order and second order. So we need to understand first of all these units. एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, why it is important to understand the units. अगर हमें यूनिट्स मालूम है, फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू को आपको गिवन है, के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है और उसके पीछे जो यूनिट है वो यूनिट उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन नॉट इजीली फाइंड बाय लुकिंग एट द रिएक्शन. सो अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द के यूनिट, then whatever the units we have discussed right now,
if these are the units are given, ये यूनिट अगर आपको गिवन है, k की वैल्यू के पीछे यूनिट गिवन होगा, तो उस यूनिट को लेके आप सीधा बोल सकते हो कि ये रिएक्शन किस वाले ऑर्डर की है. For example, if unit is given k value is blah 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 and second inverse, then you can say that second inverse means it is a first order reaction. Time inverse means it is a first order reaction. So this is how you can also calculate the order of reaction by looking at the order, by looking at the value of k and the unit. So this is all about the units of the rate constant. Now let us solve one numerical on basis of these facts. So example number 4.4 is given, where we have asked that identify the reaction order from each of the following rate constants. Identify the reaction order from each of the following rate constants. So as I told you, you can easily find. So it is given that liter means the value of k is given. Whatever the value of k is given right now, it is not important for us because we want to just look at it the units. हमें units ही देखना है. So when liter mole inverse second inverse is given, definitely it is second order reaction. When it is second inverse given, it is a first order reaction. So this is how you can find the order of reaction by just looking at the value of k. Now important concepts we are going to learn, that is molecularity of a reaction. Add into your session notebook molecularity of reaction. This is important right now, but it is it is not having any more importance as far as this chapter is concerned in future, as well as even in class 12. This is important to compare the order of reaction and molecularity. That is the important point we have to understand. After that, in the chapter, there will be no any importance for this particular point. So, molecularity of a reaction. First of all, we will write the definition. What is the definition? The number of, give title, molecularity, and write definition. The number of reacting species, that is atoms, ions, molecules, taking part in the elementary reactions, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, is called molecularity of a reaction. The number of reacting species, atoms, ions, molecules taking part in the elementary reaction, very important to put underline that elementary reactions, which must collide to each other to bring about the chemical reaction, is called molecularity of reaction. Now dear friends, let us इसको अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले. So whenever a reaction is given, it must be elementary reaction. तो ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ elementary reaction के लिए ही हो सकता है. If we are given a complex reaction and we are not knowing what are the steps, this term does not have any meaning for that. So we must be given elementary reaction. Okay, elementary reaction means the single step reaction, एक ही step में खत्म हो रही है, उसके बीच में कोई भी intermediate steps नहीं है. Now what is the collision? When reactant molecule, for example two atoms are given or two species are given, and when they are collide to each other, they will form a some product. They will form a some product, and that some products, okay, that is a part of the elementary reaction. Means इसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है. A and B collided and product is formed. That's it. Now A and B, the two particles collided. Therefore, the molecularity of this reaction will be 2. Suppose this is a one atom, one species only, and it is destructed, it is destroyed to form product. So in the reaction, elementary reaction, only A is involved, and only A is involved, therefore it is a unimolecular reaction.
For example, I have A, B, and C, three atoms or species or molecules, and they all the together simultaneously collide, not one by one. They simultaneously collide to form a product. Then the molecularity of the reaction is termolecular or trimolecular reaction. So this is the molecularity of a reaction, and molecularity is more important when you are learning the organic chemistry. But however, here we need to understand this way. So कुछ important points है जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब molecularity को आप define कर रहे हो. Number 1, it must be elementary reaction. Number 2, the reactant molecule must collide. जो reactant है वो collision होना चाहिए. अगर single reactant है तो breakdown होगा. And very third important that they should collide simultaneously. एक साथ वो टकराने चाहिए. तो अगर ऐसा हुआ है और उसके नंबर्स को आपने फाइंड कर लिया, that will be called as molecularity of a reaction. Now let us take some examples of the molecularity of a reaction. We can see over the screen that this is NH4NO2, which is broken down to N2 and 2H2, but in the reaction only one molecule is taken part, ammonium nitrate is taken part, and therefore it is called as unimolecular reaction. So this is the example of unimolecular reaction. Second example हमारे पास ये है 2HI gives H2 plus I2, and this is elementary reaction. So 2HI molecules are collide to each other, so therefore it is bimolecular reaction. You can see the third example that we have 2 NO molecules and 1 O2 molecules. So total 3 species, 3 molecules collide to each other simultaneously, and therefore it is called as termolecular reaction. So this is termolecular reaction. Now dear friends, remember that कोई भी reaction termolecular से आगे नहीं हो सकती. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ टकराए. 1 2 3 4 मॉलिक्यूल एट अ टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट. ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर वो 4 या 5 रिएक्टेंट हो गए तो भी उसमें से पहले या तो 2 टकराएंगे या तो 3 टकराएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि चारों 4 एक साथ में टकराए. तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3. मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी 0 इवन. अगर कोई किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 0 है तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है. Therefore molecularity cannot be 0, molecularity cannot be 4, molecularity can only be 1, can only be 2, or can only be 3. So only 3 types of molecularity exist. Now therefore it is written over here that you must note down the molecularity greater than 3 is not observed. Now dear friends, एक reaction given है. अगर हम इसको सिंपली ऑब्जर्व करें, बिल्कुल हमने जो पढ़ा इस तरीके से, तो उसमें एक KClO3 है, 6 FeSO4 है एंड 3 H2SO4 है. तो अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट से बात करें तो इसमें टोटल 10 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. एंड इसका मतलब ये 10 मॉलिकुलरिटी वाली रिएक्शन है? नहीं, ये 10 मॉलिकुलरिटी वाली रिएक्शन नहीं है. इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं. तो जब भी ऐसी कोई रिएक्शन गिवन हो जिसमें 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मेंशन्ड हो, तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती है. इसके लिए आपका एक ही आंसर आएगा, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. सो दिस रिएक्शन इज गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें शायद KClO3 एक FeSO4 के साथ टकराया होगा, उसके बाद रिएक्शन आगे चली होगी, जो हमें पता नहीं है. लेकिन it must be complex reaction when it is given more than 3 molecules present in the reaction. So ऐसी कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें डेफिनेटली स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि A and B रिएक्ट होकर C बना होगा, then C reacted with D to form E, then E must be reacted to
some compound called F to form compound like G. So ये सारी elementary reaction है. अगर मैं इनको स्टेप वाइज मेंशन करता हूँ तो ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं. और डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस है उसमें कोई एक रिएक्शन ऐसी होगी जो स्लोवेस्ट जा रही होगी, स्पीड उसकी सबसे स्लो होगी. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये रिएक्शन जो है सेकेंड रिएक्शन दैट इज अ स्लोवेस्ट स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. समझ लीजिए कि ये स्लोएस्ट स्टेप है. तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ के आगे चलना है कि वॉट एवर द सेट ऑफ रिएक्शंस आर गिवन टू कंप्लीट रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, ओके, द स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने का डिसाइड किया हुआ है और कुछ चीज़ आपने ऑनलाइन शॉपिंग से मंगवाई. फॉर एग्जांपल दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, सो यू हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम दी सम अदर कंट्री बाय ऑनलाइन शॉपिंग मोड. फॉर एग्जांपल, यू ऑर्डर्ड ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम दी अमेरिका. सो अमेरिका से वो फ्लाइट में आएगा इंडिया और उसके लिए फॉर एग्जांपल 24 आवर्स लगे, उसके लिए हमें 24 घंटे लगे. नाउ इंडिया से वो आपके घर पे आया तो उसको वहाँ से आने के लिए 6 घंटे लगे. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपका घर ऐसी जगह पे जो एयरपोर्ट के नज़दीक है और वहाँ से डिलीवरी होने में सिर्फ 6 घंटे आपके लगे. सो वी हैव 2 स्टेप्स. हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स हो गए हैं. जैसे कि the one step was, there were actually 2 steps. हमने वो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बना के चलते हैं. तो पहला जो स्टेप था वो 24 आवर्स का था, जो US टू एयरपोर्ट इंडिया था. एंड देन योर होम, आपके घर पे वो डिलीवर हो चुकी है, उसके लिए उसको 6 घंटे लगे. सो अगर हम देखें तो ये टोटल कितना टाइम लगा हुआ है. अगर हम इसको टोटल टाइम इसका निकालें तो वी कैन सी दैट इट्स अ टोटल 30 आवर्स. 24 + 6 30 आवर्स. सो इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स मीन्स 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं. And it is a complex process because it has to travel from one point to the other point. So it is a complex process which has 2 elementary reactions. Now इसमें स्लोवर स्टेप्स क्या है? स्लोवर स्टेप क्या है? स्लोवर माने कि धीरे धीरे होने वाला स्टेप्स क्या है? यूएस से एयरपोर्ट में आने में उसको 24 घंटे लगे, माने कि पूरा 1 दिन लगा है, तो ये स्लो स्टेप है. उस रिएक्शन के लिए ये स्टेप स्लो है, धीरा है. और अगर वो 6 घंटे लेता है एयरपोर्ट टू होम तो दैट विल बी फास्टर. सो दिस स्टेप 24 आवर इज अ स्लो स्टेप. और स्लो स्टेप हमेशा उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है. मीन्स इस रिएक्शन की टोटल जो स्पीड है 30 आवर्स, उसमें से 24 आवर्स तो ये एक स्टेप ही ले गया. माने कि जो भी रिएक्शन की स्पीड है 30 आवर्स, उसमें से बहुत सारा कंपोनेंट ये स्लो स्टेप ले जा रहा है. देयरफॉर स्लो स्टेप्स आर कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके कारण रेट की वैल्यू में बहुत फर्क आ जाता है, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अगर ये स्टेप्स को अगर हम हटा दें या तो फास्ट कर दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. एंड देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोसेस अगर स्लो हो रही है तो उसमें जो स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है. उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, अगर वो चीज़ आपको मिल गई तो आप उसको या तो हटा लो या तो उस पर वर्क करोगे तो उसको फास्ट कर लो, तो आपकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी. बिल्कुल इसी तरीके से हम पढ़ाई का एग्जाम्पल है, आपकी स्टडीज़ का एग्जाम्पल है. तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको फाइंड करना है कि कौन सी प्रोसेस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से न्यूमेरिकल्स में, कौन सी
थ्योरी में आपको समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइम उस प्रोसेस को, उस स्टेप को अगर फाइंड कर लोगे तो आप उस पर ही वर्क करना करो, जैसे कि उसको फास्ट बनाओ या तो उसको हटा दो वहाँ से, देन योर रिएक्शन रेट विल बी फास्टर. So definitely this will be very useful for the future study and future work of yours. आप इसको ध्यान रखिए, हमेशा कोई भी चीज़ काम करते वक्त अगर आपने उस चीज़ को फाइंड कर लिया कि जो सबसे स्लो स्टेप है और उसको अगर आप फास्ट कर सकते हो तो रिएक्शन स्पीड विल बी फास्टर. So this is called as rate determining step. So always remember that slowest step is the rate determining step for any complex reaction. और ये चीज़ को हम बहुत बार एप्लीकेशन अप्लाइड करने वाले हैं हमारी स्टडीज़ में. नाउ डियर फ्रेंड्स, उसके आगे लेके इसको चलते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड दैट इज़ कन्वर्टेड टू 2 वाटर एंड O2. एक्चुअली वो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है जो यहाँ पे मेंशन्ड है. H2O2 plus I minus gives first of all H2O and IO minus. Then H2O2 plus IO minus gives H2O and I minus and O2. So इन दोनों स्टेप्स में जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा. बस उसी के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू कैन नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक नोटबुक सो यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग एल्स. जस्ट हमें वो चीज़ इन्फॉर्म की जाएगी कि विच इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप, एंड देन आफ्टर वी नीड टू फाइंड आउट the rate determining step. Now what are the differences between the order and molecularity? अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है या तो डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द molecularity. There are 3 point difference. Understand these 3 points. Number 1, order of reaction is an experimental quantity. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जाता है, एंड इट कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, इवन ए फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर. मीन्स मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती. तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया कि मॉलिक्युलरिटी इज लाइक ए नोइंग दैट विच मॉलिक्यूल्स आर अटैक टू ईच अदर. वो अगर हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो 0 भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, इवन वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है. बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, क्योंकि 0 मॉलिक्युलरिटी मीन्स नो रिएक्शन, एंड कैन नॉट बी फ्रैक्शन. कोई मॉलिक्यूल आधा होके टकराएगा रिएक्शन में, ऐसा कभी नहीं होता है. सो इंटीजर वैल्यूज आर नॉट प्रेजेंट. सो दैट इज फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज दैट order is applicable to elementary as well as complex reaction. order सबके लिए possible है, elementary के लिए भी possible है और complex reaction के लिए भी possible है. but molecularity is only applicable to the elementary reaction, क्योंकि molecularity का मतलब ये है कि कितने molecules टकराए, और उसके लिए आपको elementary माने कि single step reaction चाहिए. molecularity it's only applicable to elementary reaction. For a complex reaction, molecularity has no meaning. मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे हमने आगे KClO3 वाली रिएक्शन देखी, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, तो उसके लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं बनता है. एंड द थर्ड स्टेप वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज for complex reaction, order is given by the slowest step. Remember, for complex reaction, order is given by slowest step, जो हमने अभी पढ़ा. And generally, molecularity of slowest step is the same as the order of overall reaction. तो अगर आपने कोई complex reaction ली है, I repeat, अगर आपने कोई complex reaction ली है और उसमें जो slowest step है उसको आपने फाइंड कर लिया है, तो उससे आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर मिल सकता है. हाउ? उस रिएक्शन का जो भी ऑर्डर होगा वही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं वो उसका मॉलिक्युलरिटी शो करेगा, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. तो द थिंग इज अल्टीमेटली अनफोल्डेड,
आपको क्या करना है कि अगर आपको डेटाबेस मिले और उसमें अगर स्लोवेस्ट स्टेप मिल जाए तो स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, दैट विल बी द मोलिकुलरिटी एंड दैट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो ये आपको थर्ड स्टेप में डिकोड करके समझाया गया है. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. आई रिपीट दिस स्टेप. अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, उसमें से सेट ऑफ रिएक्शन में से स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन को आप निकाल लीजिए. अब ये जो रिएक्शन है उसमें अगर दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो ये जो दो मॉलिक्यूल है वो उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द मॉलिक्युलरिटी गिवन. So this is all about today's session. We understood about the several important facts. That is, we understood how to find out the units of the rate constant K. Then we understood about the elementary and complex reaction. We understood about the molecularity, and then finally we understood about the comparison of order of reaction and molecularity. So from the next time we are starting with the integrated rate equations, which is important for the calculations of this chapter. So I hope you understood today's session. Thank you for participating. We love to educate. Thank you.